तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया। Hello and good afternoon, everyone, and thank you so much for joining us on this webinar called Business Opportunity Over Chai. Business Opportunity Over Chai is a webinar series presented by the management of Franchise India every day at 12 o'clock in the afternoon with an aim to introduce you to a new business opportunity. Today, we have a jewelry brand from New Delhi called House of Rings. House of Rings is India's leading brand exclusively dedicated to rings, with an aim to transform the ring shopping experience across the nation. The brand's mission is to make quality rings accessible to every individual. The brand House of Rings has an aggressive plan to establish 100 stores within the next 3 years. To talk more about this brand, I'm joined with Sumit Garg, the founder of this brand, and we also have Yogesh ji from the brand itself. I'm also joined with Priya Talwar. She's the our channel partner, right, from North. So before we talk about the brand and we discover the business opportunity, I would like to inform all the viewers that you will have the opportunity to ask questions related to the brand and the business opportunity. I would request you to please keep on posting your queries into the Q&A box, and we will take up all those questions post the brand presentation. Now, I would request, I think, Yogesh ji to please take the lead, tell us more about the brand, and then we'll move on to the brand presentation by Sumit ji. Over to you, sir. Hi guys. Hi guys. I'm Yogesh. I'm Yogesh this side from House of Rings and one of the non-stakeholder director promoter here. And this let me bring on the table the legacy, the expertise, and the model in a very short way to make you understand what we are bringing to the table for the franchisees. This brand has a legacy of 70 years, and Mr. Sumit Garg, who has envisaged, designed, and brainstormed this concept of House of Rings, has himself a 20 years of experience in jewelry trade. Mr. Sumit Garg has also seen and lived that that part of jewelry market when it is being transformed from unorganized to organized sector. Today, the market is around 60 to 70 billion, and approximately 33% of the size. Is it correct? Sumit? Organized market. In the organized section, and it is growing very speedily. So while living through these 20 years, he has obviously thought of and experienced certain facts of the market and has come up with this brand called House of Rings. Now, what is the expertise the group has? The expertise I've talked about has a 70 years of legacy. He has a 20 years of experience. He himself is a connoisseur. His The other director, Miss Shweta Garg, is an MBA from UK and is a designer by herself. Ju- Jewelry designing in House of Rings is being done by them. I myself, Yogesh, has an experience in logistics and financials. Have catered to brand like H&M, who have more than 4,000 stores worldwide. So their logistics, the financial control, introduction of concepts like just-in-time, Kaizen, and right of the first time are very keenly and thoughtfully and worked upon onto these concepts. Let me talk about the brand, the model. It brings the model itself is a very lucrative model. It has a very low opex. The first time in Indian market, we are coming with a model the wherein the total investment of a franchisee is less than 4 crores, and it has a very high rate of return, and very lucrative as well. We'll go into deep in all these aspects once the question answers session starts.
or when we'll present it, when Sumit ji will present all these things. But the model itself, the financial model, is very lucrative. If we talk about the customer benefits, yes, there are huge amount of customer benefits which are being offered by House of Rings for the first time in the market, uh, uh, which was never thought of. I mean, in the organized sector, we are at least 30% cheaper than price wise, and the quality is same or better than the nearest competitors. So this looks to be a very lucrative and successful project. And for the first 20 franchisees, we have come up with some of the very interesting investment schedules and models, which will again Turn on the mic, please. Am I audible? Yeah. Yeah. Am I audible now? Yes. Please go ahead. So now I'll hand over the screen to Mr. Sumit, who will further introduce the brand and the concept behind it. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, Bharatji and Yogesh. So first of all, I would like to say something about the brand itself. House of Rings, सबके मन में query है कि why another jewelry brand? There are already around 10-15 jewelry national jewelry brands which are working already in country, and they are doing very fine. So first of all, this brand has a research story of around 3.5 years. 3 साल से this idea has come up in my mind, and I have been researching around it. So what I have found in my research of major national brands, that the most of the inventory they are having, 33-35% of the inventory is rings only, right? So maybe it is any brand in the jewelry industry, the ratio of inventory of rings is approximately 30-35%. And similarly, the sales also, the monthly sales or yearly sales, उसका proportion जब हम देखते हैं, उसका proportion उसका प्रपोर्शन जब हम देखते हैं तो वो प्रपोर्शन भी अराउंड 30-35% है। तो एक तो ये फैक्टर था कि एक मेजर कंपोनेंट जो है किसी भी ज्वेलर की इन्वेंट्री का और उसकी सेल्स का, वो रिंग्स है। सिमिलर एक्सपीरियंस आई हैव इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री सिंस लास्ट 20 years। तो वहां से भी मैंने अपने रिसर्च से, अपने एक्सपीरियंस से, आई हैव कम टू दिस कंक्लूजन दैट द मेजर सेलिंग आइटम इन ज्वेलरी इंडस्ट्री इज रिंग्स। अनदर फैक्टर दैट वी कैन सी, we we have 8 to 10 places to wear a ring। हम 8 से 10 जगह एक साथ, एक गर्ल को अगर रिंग्स पहनी है so she can wear 8 rings together। there is no other jewelry which she can wear more than one। necklace है, bangles है, earrings हैं, any other jewelry can be worn only one, and rings you can so तो उसकी सेलिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ये एक मेजर पॉइंट था जिसकी वजह से मैंने सोचा कि हमें अपने आप को डिफरेंशिएट करना है। व्हेन ए पर्सन इज स्टेपिंग आउट टू द मार्केट एंड गोइंग फॉर ए ज्वेलरी शॉपिंग, तो वो ज्वेलरी कहीं से भी ले, वो किसी भी ब्रांड पे जाए, किसी भी लोकल स्टोर पे जाए, कहीं से भी ले, बट वी विल प्रमोट आवर सेल्स, विल मार्केट आवर सेल्स इन सच ए वे कि 3 साल में या 1-2 साल के अंदर अंदर हम अपने आप को रिंग्स का स्पेशलिस्ट ब्रांड बना देंगे। वी विल बी नंबर 1 इन द रिंग्स कैटेगरी। So House of Rings will be having all kind of rings। We are having rings from starting 10,000 rupees, and will be having flamboyant and humongous rings of all solitaires of sizes, and lab growns, and platinum, and diamonds, and color stones, gemstones of around 10 lakhs 12 lakhs rupees तक की रिंग्स होंगे हमारे पास। So the inventory is spread from 10,000 to 10 lakhs। ये एक प्रपोर्शन इन्वेंटरी का ऐसा होगा जिसमें हर कस्टमर की रिंग्स की डिमांड को वहां पे हम केटर कर पाएंगे। सो हमने अपने आप को एक स्पेशलिटी ब्रांड बनाया है विच नोबडी हैज डेयर टू डू इन दिस कंट्री। और व्हेन वी फॉलो द, जनरली हमने देखा एक ट्रेंड है कि इंडिया में जो भी होता है वो हम वैसे फॉलो करते हैं। अगर जोमेटो आ रहा है तो वो वैसे आ रहा है, अगर पेटीएम आ रहा है तो वो वैसे आ रहा है। तो gradually we'll see down the line of say around 2 to 3 years or 5 years,
फॉरेन कंट्रीज में मिनिमलिस्टिक ज्वेलरी चलती है, जिसमें वो लोग सिर्फ हल्की सी नेकलाइंस और रिंग्स ज्यादा पहनते हैं, और रिंग्स आर ए सिंबल ऑफ हैविंग रिलेशनशिप ऑफ कमिटेड कमिटेड रिलेशनशिप। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हमारे यहाँ भी जैसे पहनावा ऑलरेडी वेस्टर्न हो चुका है, तो ज्वेलरी भी मिनिमलिस्टिक की तरफ चली जाएगी, और विल बी सीइंग कि जो यहाँ की गर्ल्स हैं, वुमेन हैं, वो सब भी मिनिमलिस्टिक ज्वेलरी और रिंग्स ही ज्यादा पहन रहे हैं। सो द ब्रांड और उसका विजन जो है वो फ्यूचरिस्टिक है। सो एक तो ये एस्पेक्ट है कि हमने हाउस ऑफ रिंग्स क्यों बनाया। सेकेंडली, something about myself, that I have done my engineering in 2006 in textiles, and then after having an experience of around 6 months in some textile industry, then I switched on to my family business. My father is into jewelry only, but that at that time he was doing only the gold jewelry. So I introduced diamonds. I did some courses from the reputed institutes of India, and then I had some shop floor training in Surat and Bombay for around 6 months. So I can speak Gujarati, I can read their newspapers, I can read their languages, and they what they speak between the lines, I can understand their language. So then I started from the I was my father was doing retail jewelry, and I started to do wholesale in diamond jewelry. So I manufactured the diamond jewelry, and then I supplied it to the most of the states in North India, from Jammu Kashmir to Chhattisgarh, and from राजस्थान टू ढाका। इन सब स्टेट्स में वी हैड कस्टमर्स ऑफ डायमंड ज्वेलरी B2B में। तो वी हैव ए वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ डायमंड ज्वेलरी सेलिंग इन यू नो इन द नॉर्दर्न स्पैन ऑफ इंडिया। सो वो एक्सपीरियंस हमारे काम आएगा। और उसके बाद हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बॉम्बे में लगाई, 3-4 साल हमने वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाई। सो दैट एक्सपीरियंस इज विद अस। परचेज पे हमारा बहुत अच्छा कंट्रोल है। उस कंट्रोल की वजह से वी नो कि जो हम परचेज करके मार्केट तक ला पाएंगे, वो रेट्स को कोई भी कंपटीशन बीट नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई एज योगेश जी अर्लियर सेड कि वी आर 30-40% चीपर देन द कंपटीशन। द अर्लीस्ट कंपटीशन इज लाइक ब्लू स्टोन, कैरेट लेन, तनिष्क, कल्याण, मालाबार। उन सब के प्राइसेस से हमारे प्राइसेस अराउंड 30-35% चीपर हैं, विद द सेम लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन और इवन बेटर द सर्टिफिकेशन, राइट? So major brands are having their own certification, like in-house certification, while House of Rings will be having a third-party certification for the natural diamond testing and the diamond grading of about its color and clarities, and then metal QC. The metal is fine and the quality is fine, and they are also certifying the diamond weight studded in the jewelry. इसके अलावा जैसे ना ये सब चीजें हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑलरेडी सब ब्रांड्स भी कर रहे हैं, बट हम 100% IGI सर्टिफाइड में ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को एक ट्रस्ट एंड अथॉरिटी बिल्ड होती है, राइट? सिमिलरली देर आर सम अदर things also which are first in the market, which I will not disclose here right now. When we are in talks with the investors and further, तब हम उन चीज़ों को डिस्क्लोज करेंगे कि हमारी मार्केटिंग में और हमारी प्रिपोजिशंस में कुछ यूनिक चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट में कोई भी नहीं कर रहा। जैसे तनिष्क ने अपने टाइम पे, तनिष्क वॉज ए फेलियर फॉर इनिशियल स्टार्टिंग अराउंड 8 to 10 years, लेकिन उसके बाद उसने कुछ मार्केटिंग या कुछ अपने प्रपोजिशंस में चेंजेस किए, जिसकी वजह से वो आज वो इंडिया मोस्ट लव्ड ब्रांड है। So on the similar lines, we have also introduced some prepositions in our industry. So जो हमारे लिए यूनिक हैं, वो यूनिक सेलिंग propositions हैं हमारे पास, जिसकी वजह से we are pretty sure that we'll be achieving our target of 100 stores in next 3 years. Till 2028 Diwali, we'll be having 100 stores, and we are pretty sure about it. So in initial phase, अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, I have introduced about myself that I am an engineer, then I have a vast experience of manufacturing, wholesaling and retailing of diamond and gold jewelry both. और लास्ट 20 years से मैं ये कर रहा हूँ, सिंस 2004 टिल 2024। एंड इन 20 सालों में मैंने बहुत मतलब एग्रेसिवली काम किया है, एक्सटेंसिवली काम किया है। उसकी वजह से आई हैव वेरी गुड होल्ड ऑन द मार्केट। And I have introduced about something about the brand also, कि why House of Rings is there. There will be some USPs which I'll share later on in our future investor meetings, and you'll be happily convinced that there is no scope of failure. And furthermore, जब हम आगे बात करते हैं कि एक इन्वेस्टर जब हमारे साथ जुड़ता है तो उसको क्या बेनिफिट होंगे, and why an investor should invest into us. So
जब हम एक फ्रेंचाइजी की बात करते हैं तो हमने ये फ्रेंचाइजी मॉडल उन लोगों के लिए बनाया है जिन लोगों को एक हाई रेप्यूट का बिजनेस करना है, और ज्वेलरी से अच्छा हाई एस्टीम्ड बिजनेस कोई नहीं है। लेकिन जब हम ज्वेलरी का बिजनेस करने जाते हैं, तो जब हम सोने को देखते हैं कि इट इज एट 80,000 एंड सिल्वर इज एट 1 लाख रुपीज पर 10 ग्राम्स पर किलो, सॉरी। सो इन रेट्स पे जब हम एक ज्वेलरी स्टोर की बात करते हैं, तो एक ज्वेलरी स्टोर को खोलने में अराउंड 30 CR की या 25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स होती है। कोई भी बड़ा ब्रांड जो है वो 6 7 8 करोड़ से कम में छोटा स्टोर भी नहीं खोलता। सो वी हैव केप्ट आवर सेल्फ इन वन इन्वेंट्री ओनली, वी वांट टू बी नंबर वन इन वन इन्वेंट्री। तो हमारी इन्वेंट्री साइज छोटा होने से हमारी इन्वेस्टमेंट भी छोटी हो गई। लेकिन क्योंकि वो मेजर सेलिंग प्रपोर्शन है, तो हमारी सेल्स नहीं बीट होंगी, सेल्स हमारी कम नहीं होगी, इन्वेंट्री ही हमारी कम हुई है। सो यहाँ पे हम इन्वेंट्री चंक्स की बात कर रहे हैं, सेल्स बूस्ट करने की बात कर रहे हैं विद लो इन्वेंट्रीज। तो लो इन्वेंट्री पे हम एक फ्रेंचाइजी को एक हाई एस्टीम्ड बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उसकी कैलकुलेशंस में, उसकी मेकिंग में, उसकी ऑथेंटिसिटी में, उसकी अथॉरिटी बिल्डिंग में, कि ये ज्वेलरी असली है, ये डायमंड्स असली हैं, इसमें लैब ग्रोन तो नहीं है। इवन द सर्टिफाइड डायमंड्स कैन बी दे आर फेक sometimes. When we talk about Nirav Modi, when we talk about Gitanjali, there have been live incidences जिसमें ज्वेलरी के सर्टिफाई होने के बाद भी वो ज्वेलरी फेक निकली। सिमिलरली देयर आर इंसिडेंसेस एंड देयर आर न्यूज ऑल्सो कि सर्टिफाइड सॉलिटेयर्स हैं, उन पे लेजर इंस्क्रिप्शन भी है ऑफ द रेप्यूटेड लेबोरेटरीज, एंड स्टिल दे आर फेक। लैब ग्रोन डायमंड्स हैं, उनको रियल करके बेचा जा रहा है। तो वी हैव हमने इसका एक ऐसा तोड़ निकाला है जिसकी वजह से कस्टमर को 100% ऑथेंटिक हो जाएगा कि हमारे जो डायमंड्स हैं वो असली हैं। तो इस तरह की प्रपोजिशंस हम लेके आ रहे हैं। एक फ्रेंचाइजी जब हमारे साथ इन्वेस्ट करता है, तो उसको लो इन्वेंट्री, हमारी इन्वेंट्री है लगभग 3.5 करोड़ की, 3 करोड़ की इन्वेंट्री होगी, और 50 लाख का उसके अंदर केपेक्स है, जिसमें हम इंटीरियर्स, टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अदर इक्विपमेंट्स हैं, ये सब चीजें प्रोवाइड कराएंगे। तो 3.5 करोड़ की एक इन्वेंट्री में, इन्वेस्टमेंट में, एक फ्रेंचाइजी विद इन 2 to 3 months ही कैन बी ए ज्वेलर। और उसके बाद हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराते हैं, हम नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं, और हम उनको सब कुछ सिखाएंगे कि आपको ज्वेलरी के बारे में लोगों को कैसे कन्विंस करना है, हमारी ज्वेलरी स्पेशल क्यों है, हमारी ज्वेलरी ऑथेंटिक कैसे है, और कस्टमर कैसे कन्विंस होगा। तो ये सब चीजें हम सारी टेक्निकल नो हाउ, मार्केटिंग नो हाउ, और कन्विंसिंग स्किल्स, सेल्स स्किल्स, एंड अदर टेक्निकल स्किल्स, जो भी ज्वेलरी से रिलेटेड कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, कैलकुलेशंस हैं, वो सारी टेक्निकल नो हाउ वी विल बी प्रोवाइडिंग टू द फ्रेंचाइजी एंड देयर टीम ऑल्सो, right? And furthermore, there will be area managers who will be weekly or monthly visiting the stores and taking the surveys कि वहाँ पे क्या problems आ रही हैं, उनको हम कैसे tackle कर सकते हैं। So being a new brand in the industry, we'll be turning all the stones upside down, कि हर store जो है वो हमारा अपना store है। हमें उसके हर स्टोर को ऐसे चलाना है कि वो हमारा अपना स्टोर है, क्योंकि उसी से हमको ब्रांड बिल्ड करके आगे बढ़ना है। सो इसी फिनोमेना पे हम चल रहे हैं। हमारी मार्केटिंग स्किल्स ऐसी हैं कि कैसे हमारा फ्रेंचाइजी ज्यादा पैसे कमा सकता है। इफ ही इज ग्रोइंग, देन ऑब्वियसली वी आर ग्रोइंग। सो आवर होल फोकस इज ऑन कि हम कस्टमर को ऑथेंटिक सामान प्रोवाइड करवा रहे हैं, विच इज 100% ऑथेंटिक एंड 100% सर्टिफाइड ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स। वो सामान ऐसे रेट्स पे अवेलेबल करा रहे हैं जिस रेट्स पे एक होलसेलर भी बहुत मुश्किल से बना पाता है, रिटेलर तो बहुत दूर की बात है। सो देर इज नो कॉम्पिटिशन अराउंड द मार्केट। एक रिंग जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो आप किसी भी नेशनल ब्रांड से कंपेयर करेंगे, he'll not be able to make it in less than more than 40% प्राइस। सो देर विल बी ह्यूज गैप इन दैट। सो वहां पे हमारे पास बहुत अच्छा, मतलब देर देर इज ना, जो ज्वेलरी सेगमेंट है, इट इज वाइडली डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट्स, लाइक वन इज अनऑर्गेनाइज्ड एंड सेकंड इज ऑर्गेनाइज्ड। अभी योगेश जी ने भी बताया कि वो 3 साल पहले 20-25% था, वो बढ़ के अब 35-40% हो गया है, एंड इट इज रैपिडली ग्रोइंग ऑल्सो। वी हैव सीन वेरियस ब्रांड्स। तनिष्क के हमारे पास 400 स्टोर्स हैं, कैरेट लेन इज ऑलरेडी हैविंग 300 स्टोर्स, मालाबार कल्याण, दे आर रैपिडली ग्रोइंग, इंद्रिया आदित्य बिरला ने भी लॉन्च किया है, सो दे आर ऑलरेडी हैविंग 8 स्टोर्स इन 2 months। सो ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ मार्केट बढ़ रही है, बिकॉज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मतलब मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन फेक चीजें ज्यादा हैं, सस्ता मिलता है सामान, बट कस्टमर इज वेरी अफ्रेड टू बाय ज्वेलरी फ्रॉम देम। वो अपने ट्रेडिशनल ज्वेलर के पास जा रहे हैं, फैमिली ज्वेलर है, जनरेशनल ज्वेलर है, बट स्टिल दे आर प्रोवाइडिंग सम मिक्स्ड ज्वेलरी जिसमें प्योरिटी वीक है, या डायमंड्स थोड़े वीक क्वालिटी के हैं, या बिल्कुल ही फेक है। तो कस्टमर इज वेरी अफ्रेड टू पार्क देयर हार्ड एंड मनी, टू इन्वेस्ट देयर हार्ड एंड मनी विद समवन हु इज नॉट ऑथेंटिकेटेड।
तो उन लोगों को धीरे धीरे एजुकेशन चाहिए, कि अवेयरनेस चाहिए। जैसे पहले डायमंड के फोर्सेस किसी को नहीं पता था, हॉलमार्क के बारे में किसी को नहीं पता था, गोल्ड टेस्टिंग के बारे में किसी को नहीं पता था। ग्रेजुअली इन लास्ट 5 years वी हैव सीन अ लॉट ऑफ अवेयरनेस इन द ज्वेलरी इंडस्ट्री। दैट इज व्हाई मार्केट इज मूविंग टुवर्ड्स ऑर्गेनाइज सेक्टर। जब हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ मूव करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा प्रिंसिपल भी यही है कि वी एजुकेट आवर कस्टमर, एंड कस्टमर, बिफोर वी सेल एनीथिंग एनीथिंग टू हिम। सो देर विल बी वीडियो ट्रेनिंग्स टू द कस्टमर। हमारे जो एडवर्टीजमेंट्स होंगे वो एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव ज्यादा होंगे, डिस्पाइट कि हम सेलिब्रिटीज को इंट्रोड्यूस करके और कॉस्ट बढ़ा के हम कस्टमर पे या कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर पे उसका प्रेशर डालें। वी विल बी मेकिंग एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट्स, जिससे कस्टमर को ये पता लगेगा कि एक्चुअली चीज क्या है, कितने की है, और हमें क्या चीज मिल रही है। और जब हम बाय बैक करने जाएंगे उसकी, वो स्मूथ है और हमें उसका बेनिफिट भी मिलेगा। सो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारा ध्यान रख रहे हैं कि एंड कंज्यूमर को हर चीज का बेनिफिट मिलेगा। और फ्रेंचाइजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये ध्यान रख रहे हैं कि जब एंड कंज्यूमर इज हैप्पी, सो ही विल बी कमिंग अगेन एंड अगेन एंड ही विल बी रेफरिंग पीपल टू द ब्रांड। एंड जब हमारे पास मल्टीपल स्टोर्स होंगे, सो इजी बाय बैक होगा, इजी एक्सचेंज होगा। ऑनलाइन प्रेजेंस भी है यहाँ पे, हम वेबसाइट भी हमारी ऑलरेडी लॉन्च हो रही है साथ साथ। सो इन सब चीजों का ध्यान रख रहे हैं। उसके बाद एक फ्रेंचाइजी के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है ज्वेलरी के अलावा कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है विच इज सेल्फ अप्रिशिएटिंग। आप कोई काम मत करो, सारे खर्चे हमारी जिम्मेवारी है। मतलब बीइंग ए ब्रांड ओनर आई एम प्रोमिसिंग टू कवर द लॉस गारंटी। सो कोई भी आपका रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरीज, इन तीनों चीजों का जो भी टोटल होगा, इफ इट इज लेस देन योर प्रॉफिट्स, देन कंपनी विल बी कवरिंग इट at the end of the year. If the company is not the store is not making any money, and it is a loss making store, so company will be bearing it. Obviously हम हर मंथली क्यूसी भी कर रहे हैं, असेइंग भी कर रहे हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। विल बी प्रोवाइडिंग लोकल मार्केटिंग सपोर्ट, विल बी प्रोवाइडिंग नेशनल मार्केटिंग सपोर्ट, और उनके एरिया में हमारी विजिट्स भी रहेंगी। इवन आई विल बी विजिटिंग द, बीइंग यंग टू द ब्रांड ना, सो आई एम वेरी एग्रेसिव कि मुझे सब चीजों में इन्वॉल्व रहना है। आई एम पर्सनली इन्वॉल्व इन एवरीथिंग फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। I am personally having all the meetings, and I'm personally taking care of the interiors and the brand building and the everything related to the brand, related to the product. We are doing a lot of research and QC and control on the product quality and the product designing। किस तरह का हमारा ऑडियंस होगा, वो उसके पास क्या कम्युनिकेशन जाएगा, वो कैसे हमसे कन्विंस होगा, उसकी क्या पेन पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान रख के हमें उनको क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कराना है, सो दैट दे आर हैप्पी एंड दे आर कमिंग टू अस अगेन एंड अगेन। तो इतने सारी चीजों पे जब हम टेक केयर करके आगे बढ़ते हैं, तो हमें नहीं लगता कि हम कहीं पे भी इन्वेस्टर्स को फेल होने के लिए कुछ जगह छोड़ रहे हैं। सो विल बी कीनली देयर विद देम। और सेल्फ अप्रिशिएटिंग में इसलिए बोल रहा था कि गोल्ड लास्ट 20 ईयर से वी हैव बीन वाचिंग इट दैट गोल्ड इज इंक्रीजिंग अराउंड 12 to 14% एनुअली इन सिंस लास्ट 20 ईयर्स। तो अगर एक इन्वेस्टर कुछ भी नहीं करता, वहां पे लॉस गारंटी हम प्रोवाइड करा ही रहे हैं। जो आज इन्वेंट्री 3 करोड़ की है, वो अगले साल वैसे ही 3.5 की या 325 की, 315 की हो ही जानी है। तो सेल्फ एप्रिशिएटिंग स्टॉक है, हाई रेप्यूटेड बिजनेस है, लो केपेक्स है, लो इन्वेंट्री है, लो इन्वेस्टमेंट्स हैं, एंड हायर रिटर्न्स हैं। वी आर क्लेमिंग दैट व्हेन इन्वेस्टर इज there with us for around 5 to 7 years, he'll be making more than 20% annually. So high returns on investments, low inventory, low investments on capex, जल्दी रिटर्न वापस आ जाएगा, जल्दी पैसा रिटर्न आ रहा है उनका। 100% सिक्योर्ड बिजनेस, जितना आपने इन्वेस्ट किया है वो सारा आपके ही पास है, आपके स्टोर पे है, और जो गोल्ड की अप्रिसिएशन है वो भी आपकी है। सो देर इज ए विन विन सिचुएशन फॉर एन इन्वेस्टर। और बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट है, जैसे देर आर फीमेल्स ऑफ अराउंड 40 years एंड अबव, उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं और वो खाली हैं, उनके पास, उनको चाहिए कोई ऐसा बिजनेस मिल जाए विच इज ए व्हाइट कॉलर जॉब, जिसमें कोई परेशानी नहीं है। यू डोंट हैव टू डील विद द लेबर क्लास, यू आर डीलिंग विद गुड पीपल, कस्टमर इज कमिंग विद ए स्माइल। वी आर नॉट ए बिजनेस, वी आर इन ए लग्जरी बिजनेस। सो जब आदमी के पास पैसा स्पेयर हो जाता है, तब वो ज्वेलरी लेने आता है, तो वो हमेशा खुशी में ही आएगा। तो दे आर हैप्पी, दे आर स्माइलिंग, दे आर सेलिब्रेटिंग देयर ओकेजन्स। किसी की एंगेजमेंट है, कोई अपने बर्थडेज पे गिफ्ट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो जब हम उनके हैप्पी ओकेजन्स में उनके पार्टनर बनते हैं, तो एक जो ओनर ऑफ द स्टोर है, ही इज ऑल्सो डीलिंग विद द हैप्पी पीपल। सो एक हैप्पीनेस का क्वोशंट भी हम इंक्रीज कर रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स की लाइफ में, उनको बिजी भी कर रहे हैं, उनको हाई रिटर्न्स भी दे रहे हैं।
So it is a very good opportunity for the people who want a very good business, a very reputed business, and want to make a good money out of it also. And बहुत अच्छा वो भी है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट जब होती है तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि हम एक ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व है जिसमें हमें मतलब हमारे लिए विन विन सिचुएशन है. There's a question. So I think I have covered Bharat ji about the points. Anything Okay, so Nani, we also have like Ashok ji, in case if Ashok ji can help us uh, understand the And I have a financials. presentation also if you guys allow me to share it. Hi, yeah, I'll- please. I'll briefly discuss about it, right? There's a question as well in between that. We'll take up the questions. How will Yeah. take up that question post the presentation? Post the presentation, right? Yes. So I'll be just sharing the screen. Sure. Just a second. Leave that on. And then I'll ask Ashok ji if you can also add some values to understand the financials. Sure, Bharat. So let's run the presentation. Then I will basically put my remarks and my comments Sure. of the presentation. Just a second. I think I have done something. Yeah, so जैसे मैंने पहले बोला कि अ, हमारा हमारा मोटो ही यही है कि हमें जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे साथ इन्वेस्ट करना चाहता है कि एक इन्वेस्टर जिसके पास एक मनी है अपने पार्क करने के लिए तो वो बहुत इजीली ज्वेलर बन सकता है. सो वी आर इनवाइटिंग इन्वेस्टर्स टू बिकम ए ज्वेलर इन ए वेरी लो इन्वेंटरी एंड इट इज ए वेरी रेप्यूटेड प्रोफेशन. आई हैव ऑलरेडी एलिबरेटेड दिस पॉइंट. जो सेल्फ एप्रिशिएटिंग स्टॉक है 10 से 12% की एप्रिसिएशन गोल्ड में 14 to 15% हो रही है. हम उसको कंजर्वेटिवली 10 to 12% लेके चल रहे हैं. लॉस गारंटी है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड सैलरी ऑफ द स्टाफ. एवरीथिंग इज कवर्ड बाय द कंपनी. अगर कहीं पे भी लॉस होता है तो कंपनी विल बेयर इट. लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट है. 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में कहीं पे भी ज्वेलरी का एक शोरूम नहीं बन सकता, नहीं खुल सकता. हाई रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट है क्योंकि हमारी इन्वेंटरी भी छोटी है और लार्जेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हमने पकड़ लिया है. सो वी आर वेरी श्योर दैट वी विल बी एबल टू अचीव दिस इन्वेंटरी ओवर 3 to 5 years. नो डेड इन्वेंटरी बिकॉज इट इज इन हाईएस्ट सेलिंग आइटम्स, राइट. सो वी आर प्रोवाइडिंग स्टॉक करेक्शन ऑल्सो. कुछ डिजाइन ऐसे होंगे जिनको हम क्वार्टरली रिव्यू करेंगे विच आर एजिंग एंड नॉट सेलिंग. सो विल बी रिप्लेसिंग देम विद द न्यू स्टॉक, राइट. सो something about us, it is India's first only rings brand, right? So itself it is an USP कि हमारे जैसा दूसरा कोई नहीं है. We are launching new designs every season. We are trying to launch new designs every quarter, but every 6 months, like in fall, winter and summer, autumn, right? इन 2 सीजन्स में जैसे ही गारमेंट्स लॉन्च होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम अपने डिजाइन भी लॉन्च करते हैं. प्रोडक्ट्स रेंजेस हाफ विद रिस्पेक्ट टू नेशनल ब्रांड्स. आई ऑलरेडी सेड दैट कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं डायमंड के जो रेट्स हैं दे आर अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% चीपर देन द नेशनल ब्रांड्स. एंड वी आर 100% IGI सर्टिफाइड एंड HUID हॉलमार्क्ड as per the BIS guidelines. The vision behind is to revolutionize ring shopping experience in India. We want कि आदमी ज्वेलरी कहीं से भी ले, किसी भी दुकान से ले, अपने ट्रेडिशनल ज्वेलर पे जाए, ब्रांडेड पे जाए, तनिष्क पे जाए, कहीं भी जाए, वो अपना रिंग का चंक लेने हमारे पास जरूर आए. और जब आप भी एज्यूम करके देखिए, आप घर से निकले, आपको रिंग लेनी है, आपके सामने 4 शोरूम खुले हुए हैं. एक तनिष्क है, कैरेट लेन है, ब्लू स्टोन है, मलाबार है, कल्याण है और एक हाउस ऑफ रिंग्स है. सो नाम में ही एक एक कैचिंग है, एक अट्रैक्शन है. आपको लगेगा कि यार ये रिंग्स के स्पेशलिस्ट हैं, एंगेजमेंट रिंग्स तो मैं यहीं से डिजाइन कराऊंगा या कराऊंगी. तो जब हम इस तरह की स्पेशलिटी लोगों को प्रोवाइड कराएंगे सो वी थिंक कि हमारे पास फुटफॉल जनरेट करने के लिए हमारा नाम ही काफी होगा. एंड वी आर ट्राइंग टू बी एक्सेसिबल फॉर एवरी फिंगर थ्रू 100 स्टोर्स इन नेक्स्ट 3 years. A promise of quality, genuinity and best pricing. So I have already explained this brand journey of myself. Because the brand is new, House of Ring is a new brand, new launch,
and but the vision behind, the man behind, and the experience behind is vast, heavenly vast. Because I have started from retail, then wholesale to pan India, then a factory in Mumbai, then a retail boutique store, then a flagship store in Kohat Enclave, Pitampura. So I have a vast experience of all the venues of jewelry, right? So this is something about me. Renowned, I am a renowned in my industry. I have completed my engineering degree in textiles from TIT Bhiwani in 2006. Diamond graduation I have done from GIA, and certification in diamond from IIGJ. It is also a government institute, Indian Institute of Gems and Jewelry. It is working under gems and jewelry sector only, government. A leader, I have been a leader in the industry. My colleagues and my peers in the industry has accolades my skills of management, leadership, doing business and all. In-depth experience on the industry through wholesale, retail and manufacturing. किसी भी एक ज्वेलर को ना एक ही तरह का एक्सपीरियंस होता है, या तो वो होलसेल कर रहा होता है अपनी पूरी जिंदगी, या वो रिटेल कर रहा होता है, या जनरेशनल ज्वेलर्स भी हैं, जैसे हम त्रिभुवन दास भीमजी ज्वेलरी की बात करें, या बहुत सारे ज्वेलर्स हैं, छोटे शहरों में ज्वेलर्स हैं, साईमल श्यामलाल दास हैं, बरेली के बहुत बड़े ज्वेलर हैं। तो उन ज्वेलर्स के पास सब कुछ है, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस एक ही तरह का होता है, उनको सिर्फ रिटेल करनी आती है। ऐसे ही होलसेलर्स हैं, चेन हाउस है या कोई भी बड़ा ब्रांड है, एमरेल्ड इंडस्ट्री है, कोयम्बटूर की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, दे हैव मतलब दे आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया, but they know only the manufacturing. So being having all the experiences, I know how to source, how to market, how to retail, how to be in distribution channel and everything. I have been executive member of and director of the Bullion and Jewelers Association Chandni Chowk, executive member of this association and director of IBJA, Indian Bullion and Jewelry Association. India's most prominent jewelers awards मिला है मुझे 2019 में, 2020 में, by Amrita Rao and Soali Khan. Established and successfully operating 5 jewelry businesses ranging from manufacturing and wholesale to retail and e-commerce. Have been participating and presenting the brand to various trade shows in India and abroad. This is our corporate portfolio. We are working with more than 50 design factories in diamond category and around 50 others in gold category. We have 300 plus B2B clients spread it over many states of northern India. We have 18,000 B2C clients. Presently, we are working in retail also. 20 plus of years of experience I have, and designs 4,000 I have mentioned very conservatively. It is uncountable. So we have clients in various countries also. We have people coming from Australia, UK, US, and every states of the country. We have elaborated this also earlier, that jewelry market size is very big and it is growing rapidly. Ring section is approximately 30%, 33% of the total market size. Jewelry demand is also growing in India. पूरे वर्ल्ड में जब रिसेशन होता है, इंडिया में रिसेशन नहीं होता, वो इसीलिए नहीं होता कि इंडियन फीमेल्स के पास इतना गोल्ड है जितना शायद पूरे वर्ल्ड के पास नहीं होगा। तो हमारी हमारी कंट्री के लोगों का, हमारी फीमेल्स का, वुमेन्स का गोल्ड से प्यार, ज्वेलरी से प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता। कोई भी सेक्टर मंदा हो सकता है, कारें बिकनी कम हो सकती हैं, ज्वेलरी और उससे लगाव, शादियां और उससे उसमें ज्वेलरी देना लेना कभी कम नहीं हो सकता। सो ग्रोथ ड्राइवर्स आर लाइक ग्रोइंग मिडिल क्लास पॉपुलेशन। आफ्टर कोरोना लोगों की अपनी लग्जरीज पे खर्च करने की एक टेंडेंसी इंक्रीज हुई है, चाहे वो रिसोर्ट्स हैं, होटल्स हैं, ट्रेवल है, या ज्वेलरी है, या अदर ऑटोमोबाइल सेक्टर है। इंक्रीजिंग वुमेन वर्कफोर्स, दैट इज अ टारगेट ऑडियंस फॉर अस. The working class women who are going offices daily, they want minimalistic jewelry, so we'll be having jewelry for them, for their get-togethers, for their cocktail parties, and for their then we are having promise rings, we are having proposal rings, and we are having designs from all the countries. Earlier the brand name we have thought of was World of Rings, because we are collecting rings from Turkey, Italy and Dubai and Hong Kong, Bangkok. मतलब हम सारे वर्ल्ड की बेस्ट रिंग्स हमारे पास होंगी, सारे कंट्रीज से बेस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं, सिटीज हैं, वहां की ज्वेलरी हमारे पास बेस्ट होगी. सो विल बी हैविंग ऑल द मिक्स ऑफ ज्वेलरी इन वन प्लेस इन रिंग्स कैटेगरी. राइज इन ब्रांडेड ज्वेलरी ये भी ऑब्वियसली दिख ही रहा है. सो मार्केट पोजिशनिंग जब हम देखते हैं तो जो वेरियस ब्रांड्स है, जैसे तनिष्क इज अपर साइड एक्सपेंसिव है लेकिन क्लासिक है.
कैरेट लेन, ब्लू स्टोन, मेलोरा, ये भी सब क्लासिक हैं और मिड मिड रेंज में है। हाउस ऑफ रिंग्स इज फैशन ओरिएंटेड. We are not into classical jewelry. We are into fashion oriented jewelry which you can wear every day. क्लासिक ज्वेलरी क्या होता है ना, आपने शादी में रिंग बनवाई बड़ी सी, आपने वो पहनी और उसके बाद लॉकर में रख दी आपने, फिर वो करवा चौथ पे निकालेंगे उसको पहनेंगे फिर लॉकर में रख देंगे. सो आर प्राइमरी मोटिव इज कि हमारी जो ज्वेलरी होगी विच इज ओनली वियरेबल. हम वी आर वेरी मच अगेंस्ट विद लोकर ज्वेलरी. हमें कोई भी ज्वेलरी ऐसी ना बनानी ना बेचनी जो लोकर में जानी है. आप उसको अपने ड्रॉर्स में रखो, मिनिमलिस्टिक है, आप उसको रोज पहनो, 3 साल पहनो, उसके बाद उसको एप्रिशिएटेड वैल्यू पे एक्सचेंज करके फिर से नई ज्वेलरी ले लो. वाई टू ब्लॉक इट? So fashion that you will love at half the price with respect to other brands. So this is something about the investors. 500 to 800 square feet of area, Very small space. very small space, very easily, conveniently available in the market. Primary requirement is कि there should be a local national jewelers around you. 100 meters पे, 500 meters पे, 50 meters पे एक नेशनल ज्वेलर होना चाहिए. तनिष्क, कल्याण, मालाबार, सेनको, रिलायंस, आदित्य बिरला, कोई भी, कैरेट लेन वगैरह कोई भी. फ्रेंचाइजी फीस इज 11 lakhs. सेटअप कॉस्ट इज अराउंड 40 lakhs which includes interiors and equipment cost. Interior design and setup to be done by franchises as per brand drawings. हम लोग अपनी गाइडलाइंस देंगे, हम लोगों के पास सारे डिजाइन्स फ्रीज्ड हैं. किस तरह का शोरूम बनेगा, आई विल बी ब्रीफली शोकेसिंग दैट आल्सो. एंड पीओएस सॉफ्टवेयर विल बी प्रोवाइडिंग बाय हाउस ऑफ रिंग्स ओनली. ब्रांड का जो पीओएस होगा दैट इज आल्सो वेरी कन्वीनियंट. सेल्स स्टाफ के पास एक टैबलेट होगा, उस टैबलेट पे उसने क्यूआर कोड स्कैन करना है टैग का, और उस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही उसके पास सारी डिटेल आ जाएगी. ऑन एनी सिंगल क्लिक वो प्रिंटेबल फॉर्मेट में आ जाएगा. कोई डिस्काउंट करना है, जैसे भी करना है, वो सब उसमें अवेलेबल है. और सेल्स स्टाफ ही बिना किसी टेक्निकल और अकाउंट्स की नॉलेज के कस्टमर को एंड तक कन्विंस कर सकता है. तो इससे हमारा जो टीम साइज है वो भी रिड्यूस होता है. कमर्शियल अप्रूवल, फायर एनओसी, ओसी एंड सीसी, ये सब ऑब्वियसली फ्रेंचाइजी विल बी प्रोवाइडिंग. प्रॉपर्टी डिपॉजिट वो फ्रेंचाइजी की कॉल होगी, जो भी वो रेंटल पे स्पेस ले रहे हैं तो ही हैज टू प्रोवाइड इट. एप्रिशिएबल स्टॉक वैल्यू इज अराउंड 3 crores. It is variable to 3 to 3.25 crores depending on the gold rates prevailing. ROI is approximately 20%. It can be 18, it can be 22 also. Around 800 to 900 units of jewelry will be providing. ROI on capex plus inventory is around 4 years. और सिर्फ capex की बात करते हैं तो हम 1 साल में ही capex रिटर्न दे देंगे, 1 या 1.5 साल में. लॉकिंग पीरियड इज वी आर डिमांडिंग 5 years बिकॉज इट इज ज्वेलरी. आपका रेप्यूट बनते बनते और आपकी दुकान चलते चलते टाइम लग जाता है, बट स्टिल वी आर वांट अ कमिटमेंट ऑफ एटलीस्ट 3 years. Agreement tenure is 9 years. And average gross margin is around 20% on sales. ATL marketing will be provided by House of Rings, and local store retail marketing will be done by franchisee only. There will be support from our side also. That details will be providing in the meetings. And D&L cost, ये क्या होता है? Indian logistical. Okay. Is discounting in logistics. Logistical. This will be providing by the brand, and site selection support provided by the company. Store loan support, promotional advertisement and one-time packaging material will be by the company. And we can discuss these things in detail when we talk and sit on the table. So ideal partner profile, as I have already explained, women of all ages with entrepreneurial spirit. So this is the product for the rings, and we want women to come forward and take the lead and be the entrepreneur. And it is a very reputed business for them. Investors with sufficient financial bandwidth and strategically located properties. अच्छी locations हो तो we are very we will be welcoming those people. And young entrepreneurs also will with entrepreneurial spirit and passion and dedication for jewelry industry. जिसको थोड़ा सा भी सोने और डायमंड से प्यार है ना, वो हमारे लिए अच्छा एक पार्टनर है, चैनल पार्टनर है. क्योंकि जब तक अपने दिल से आवाज नहीं निकलती ना, जैसे मुझे बहुत प्यार है शुरू से ही, तभी मैं इंजीनियरिंग करने के बाद भी इस बिजनेस में हूँ. आई लव माई बिजनेस, आई लव माई प्रोफेशन. तो दिस इज माई हैप्पी प्लेस. पूरे दिन में मुझे जो भी अच्छा मेरा टाइम बीतता है वो मेरे शोरूम पे, मेरे ऑफिस में बीतता है. सो सेम आई विल बी प्रोवाइडिंग विद माई टू माई पार्टनर्स ऑल्सो. वो इतने खुश होंगे अपने शोरूम पे आके कि वो जैसे एक छोटा बच्चा स्कूल जाने के लिए रन करता है ना, उनको वैसा लगेगा कि हम कब अपने शोरूम पे पहुंचेंगे, कब हमें कस्टमर से डील करने को मिलेगा.
कोई चिक चिक नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कोई मारामारी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है किसी तरह की. इट इज वेरी वेरी हैप्पी Smooth going. बिजनेस, स्मूथ गोइंग बिजनेस. So rollout plan, as I've already explained, Delhi and surroundings in phase one, and then phase two is northern India, and then phase three is central and western India. Then key support functions like support में pre-opening में तो obviously everything will be catered by us only, will be taken care. Site selection है, store setup guidance, showroom design, layout सब हमारा freezed है. बहुत जल्दी जल्दी हम सब कुछ कर सकते हैं. Once the investment and the LOI is signed, another 60 days and we can do the inauguration. POS system, software, everything is in place. Staff training is in place. Store launch promotional activities क्या करनी है. Digital marketing हमारी बहुत strong है. CRM एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट में हम मास्टर हैं. ऑटोमेशन है हमारे पास, चेकलिस्ट है हमारे पास, स्टोर ऑपरेशंस मैनुअल हमारे बने हुए हैं. सो इट विल बी वेरी इजी गोइंग फॉर द इन्वेस्टर. पोस्ट ओपनिंग में हम लोकल मार्केटिंग में असिस्टेंस देंगे. हमारे पास ना बहुत सारी एक्टिविटीज हैं. वी हैव अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज व्हिच वी कैन डू फॉर लोकल प्रमोशंस, ऑनगोइंग डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन सेल सपोर्ट, कंसिस्टेंट मार्जिन्स, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, स्टॉक रोटेशन एंड करेक्शन. ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ. Around 20% correction probably. You can discuss and So tell. this is about it, and let's partner to grow together. House of Rings is destined to be the number one brands of rings in India very soon, and I don't want the dedicated people to miss the opportunity. Thank you. Right. Thanks so much, Sumit ji, for the detailed presentation. Just wanted remarks from Ashok ji as well before we take the questions in the chat box. Yes, please. Sure, Bharat, and thank you. I think, Sumit, you have explained the business model very well. For any investor, even a franchisee potential partner, they are looking for opportunity in retail or F&B or in jewelry, in any business. No, there are few things they want from the brand to support them. One is the credibility of the brand. So that's basically Sumit. He comes from a very, from the legacy. He's carrying the knowledge and industry knowledge, and he is the leader. He is well known person in the jewelry industry. So his credibility, his strength is more than enough to educate investors, educate partners to do this business. Second point is basically is the investment. How much investment that investor has to put in the business, and what is the return on investment. So if you look at his investment, the return on investment that they have estimated based on a very conservative projections. So on a 3 crore inventory, they have just considered only one stock rotation. So that means you are saying you are selling only 3 crores worth of inventory every year, then it will increase like 10-20% in the coming years. But the initial projections, Ashok ji, I would like to interrupt here, and You too. yeah, तो 3 करोड़ की इन्वेंट्री रोटेशन के लिए आपको सिर्फ 3 या 4 अंगूठियां डेली बेचनी है. एक स्टोर के लिए 3 रिंग्स बेचना कोई भी बड़ी बात नहीं है. मतलब वो वीकेंड्स पे वी कैन कवर द टारगेट ऑफ 20 रिंग्स इन अ वीक. सो इट इज वेरी वेरी कंजर्वेटिवली हमने लिया है. जो हम कर रहे हैं ऑलरेडी या जो अदर ब्रांड्स कर रहे हैं उसका हमने 20% ही लिया है. सो आवर फिगर्स आर वेरी कंजर्वेटिव एंड वेरी इजी टू अचीव. Yeah, absolutely. Yeah. So that has been considered like, based on a very conservative projections, your returns are, they are saying like 20%, and this 20% returns including your inventory. So if you talk about your capex is only 50 lakh rupees that you will recover in 1 year, and you are capex free. Then basically your inventory is making money for you. So 20% returns you get year on year on your from the business, plus your inventory stock that increase at least by 10%. So in 9 years at least you are going to make 3x of your investment. So you are investing 3 crores, means you are going to generate at least 9 crores from the same business. Now, third element basically is the ease of doing business, because the complexity in the business. So what they have done, what especially basically Sumit has designed this business, that my franchisee, he has to just only manage store and do the sales, and he will train the staff how to do the sales, and they are giving a single point, single window support. So if franchisee face any problem in terms of product exchange, or product deliveries, everything will be managed by the brand team itself.
if there are some manufacturing defects or some, the Yes, repair everything or will be taken maintenance care of. is required. There will be repairs, there will be customization, everything will be taken care by us only. So new designs, customer requirement. If customer visit your store and inventory is not available store at your store, company is giving the technical support. You can sell this product online, and company will do the fulfillment and will share the margins to the franchisee. So Right. that is a lot of elements and a lot of value they are bringing for in their franchisee partners. So franchisee can do their business at ease. Customer queries, they are developing a customer support system. So if any query or any complaint registered from the from the customer, it will be resolved within 48 hours. So that kind of the advanced concept they are working on, right? And so that is the third point. Now the fourth element of the business, basically, to be in the business, the pride that you feel, right? And that is the most important part of the business. Pride and joy of doing the business. Yeah. So they are bringing basically it's a very unique value proposition for the investors and very disruptive idea. I think this is going to be the first time in jewelry industry, that kind of concept. And last thing, basically, they have also basically de-risked the franchise. So they have covered their losses. If they make losses in the business True. first year, they are going to recover their losses. So that is the biggest advantage. So I think It is 100% secured business. Right. yeah, This is very rare that the franchisor take care of your losses as well. Right. So Because we that's are the sure best about part. it. It is not कि हम रिस्क लेके चल रहे हैं. We are sure, pretty sure कि हमने कंजर्वेटिवली सेल्स इतनी कंजर्वेटिवली ली हैं और हमारे प्राइसिंग्स ऐसे हैं. Everything is so secured. There is no chance of losses. Undoubtedly, no doubt. yeah. So Bharat, over to you. You can take the Okay, investment. so yeah, thanks so much, sir. So we have a few questions in the chat box. If we can take that. I'll just take the questions. Sumit, there's a question from TU Menon. Do you provide customized design based on occasion, geography, and demographics for the Kerala market? Presently, we have not touched the southern side of India, but definitely we are working for it. And if few investors come from the southern side, we can, start right now also. We have to just work on the product mix because we have catered to, we have designed all the product and the store operations and everything as per the northern market. But definitely we can work out on south market also. There is no big deal. Okay. And the second questions comes from Damandeep Singh. How many stores are we operating as of now? Which all locations? Yeah, this I have missed out. This is a new brand and we have just launched it. But in my, in my personal circle, I have sold 2 franchisee stores. One in Gurgaon. It is coming in Old Gurgaon. It will be inaugurated in first week of December. And one is coming in Pitampura, Delhi. That will also be inaugurated in first week of December. Yeah, so here, Sumit, I would like to add for the audience, because 2 months ago we have started, discussing about Yes. strategy concepts, and within a month, basically, when we have developed our model, we have some clarity on the legal documentation. And within 1 month, Sumit has already closed 2 franchisee. Yes. So basically, the concept that we have introduced is अशोक जी, मैं जितने लोगों को भी एक्सप्लेन किया ना, मैंने एक्सप्लेन किया था उनके क्वेश्चंस जानने के लिए, लेकिन जैसे ही हम एक्सप्लेन करते थे तो लोग ऐसे पीछे पड़ जाते थे कि भैया नहीं, बस बाकी मत बताओ, अब हमें कैसे खोलना है वो बताओ. तो पीपल आर सो एग्रेसिव आफ्टर लिसनिंग टू द मॉडल, आफ्टर सीइंग द, अभी मैंने आपको शीट्स नहीं दिखाई, वो सब चीजें लेटर ऑन स्टेजेस में जब हम मीटिंग्स में बैठेंगे तो वो शीट्स जब देखता है आदमी तो उसको पता लगता है कि इसमें इसमें कुछ भी फेक नहीं है. एवरीथिंग इज सो रियलिस्टिक. सो वी हैव वर्कड ऑन माइन्यूट डिटेल्स कि कितने ग्राम की अंगूठी होगी, उसमें डायमंड्स कितने जाएंगे, वो उसका प्रोपोर्शन क्या होगा, लेबर कितनी होनी चाहिए, बाकी ब्रांड्स क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे. सो वी हैव वर्कड ऑन वेरी वेरी स्मॉल टाइनी माइनी थिंग्स. एंड अभी मेरे पास और अराउंड 10-12 क्वेरीज हैं, बट मैं उन क्वेरीज को भी होल्ड कर दिया है कि जब तक हमारे 2 शोरूम इनॉग्रेट नहीं हो जाते एंड वो 1 महीना रन नहीं कर जाते अच्छे से, हमारी सब चीजें ऑन द शॉप फ्लोर आ जाएं, we are secured on these, we are not in a haywire to run and open the stores
लेकिन हाँ फेब तक आई एम श्योर कि फेब तक विल बी क्लोजिंग अनदर LOIs of another 10 stores in Delhi NCR only. Yeah, absolutely. So I think for any business, if you understand the microeconomics of your business, Yes, there is no chance that you can fail. So I definitely. think you have already perfected in your in your microeconomics. So you know the pain point of the customers as well as your the Definitely. store owner. And that is the best part, in fact, right? The kind of expertise, the kind of experience Sumit comes with is really amazing, right? And that is what basically is required for being a very good, the franchisor. Of course, this can be one of the best investment option, right? In case if someone want to go into the jewelry, the sector, the kind of support, I mean, everything is there, right? So, in case if you would like to get in touch with the brand and have a more discussion about, the business opportunity, of course, you can get in touch with our helpline number. That is 9717683838. I am putting it in the chat box. And any other question from your side? There is a question like, is FOCO model available for it? Okay. Yes, there is a FOCO model available, but in Delhi NCR only, not for the further regions. Okay. And there is also a question. There's a question from Nikki Marwa. Yeah, can you help with ROI, break even, and annual appreciation on inventory? Annual appreciation, जो rates का appreciation है, that is around 10%. ROI is around 15 to 20% on 3 years to 5 years. And break even on the capex will be in 1 year, and break even on capex and inventory will be around 3.5 years. Okay. Okay. Since we do not have any other further question, I think let's end this session. This session has been really very informative and very interactive. I really appreciate Sumit for being available for this webinar and sharing the brand and the legacy that you have and the business opportunity for the investors. And also, I would like to thank Priya ji for being available for this webinar as a channel partner. Ashok sir for being available to clarify more about the business model. So, so that's it for the day. Let's close this session, hoping the best for the good, franchisee business options. Tomorrow, guys, we will again come up with a new brand and we will explore further business opportunity. The last few lines that I really want Sumit to tell to the franchisee. Any few words from your side? Only this I would like to add that if you are really interested to have a franchisee business, then it is a golden opportunity to enter into a gold and diamond business. And I understand and I am assured that there will be no competition to us, as we are only specialty brands, and we are doing a lot of research and we are coming up with a lot of offers for franchisee and the consumer. So it is a win-win situation for everybody. So please come forward and ask as many as questions you have. We are available to answer. I am not an ornamented CEO. I am, working with karigars, with my investors, with my team at the shop floor with them. So I am available round the clock. Anytime you have any query, please reach out to me or the Franchise India Group. Thank you, Ji, for this opportunity. Thanks so much, sir. Thanks so much, Smith. Best for the And Yogesh ji for being available. Thank you. Thanks so much, guys, everyone.